Minimum Wages Act 1948, wage legislation. We all understood that wage is one such very important criteria for which we all are working, right? Any employee, any labor, anyone, everyone is working only for getting their salary on time. So wage. Now, definitely the government need to ensure that everyone get their wages on time. A proper payment has to be given so that an economic or social benefit or an economic or social security has been given, right? For this is the main reason that this Minimum Wages Act 1948 came into force, right? Now, in order to just safeguard this economic or social protection for the employee and to save them and provide them a healthy and comfortable living condition, this is being enacted. So government stepped in to safeguard the interest of workmen by enacting suitable legislation. So simply the government stepped into this your means legislation, stepped into this what to say, a minimum wages legislation, simply stepped into this legislation process, making a law. That is what legislation is all about. So making a law simply in order to safeguard, this is only in order to safeguard the labor. Fine. Safeguard the labor. Now, the conception of minimum wages is based on the principles of equity and social justice. So, entirely this labor law, we all are discussing about the labor law. Within that, this labor law concept, we are going to this minimum wages. So, this entire concept of minimum wages, is simply to safeguard, to in order to means it works on the principles of equity and justice. Clear है ना कि एक equitable एक salary मिलनी चाहिए. Its underlying idea is one that he who works is entitled to a fair remuneration. So this is one such principle of minimum wages which may enable him to live a life consistent with human dignity. Wages are not an economic abstraction but an important price in society. So, wages is an important price in society. Ultimately, we get everything in terms of money. So, wages, economically, wages may be the price of labor. So, when we talk economically, in economics also, no, we talk about land, labor, capital, and organization. So, economically speaking, wages is the price of the labor, right? Price of labor. Interest is the price of capital and profit the price of risk carrying. But from social point of view, they are unique in that, and they not only constitute payment for the effort but also provide the means of subsistence for those who supply the effort. So when we talk about wages, it is not only an economical term, that is only we are paying wages as a price of labor, but labor means human. So human factor need to be considered whenever we are studying the labor law concept. We have to consider the human aspect in it. That is human. When we consider the human concept in it, that means we have to understand that everyone needs to sustain themselves, and this wages act as a means of subsistence, right? Means of a subsistence for those who supply the effort. Whoever is supplying their effort, supply of effort, right? All over the world, wages and their problems have been assuming great importance with the yeah, all over the world, wages and their problems have been assuming great importance with the advancing economic and social development, which has for its result the larger proportion of population gaining their living as employees of wage earner. The same in case with our country. Means in every country, this wage legislation and the concept of wages has been given a larger significance. Though it is predominantly agriculture, but in recent it has made rapid strides in the field of industrial and commercial development. So we all know that our country is mainly an agrarian economy, though we are moving towards industrialization and commercialization, and that is why this labor concept has been given much more importance. This has resulted in an
appreciable increase in salaried and wage employment. So this is very clear that due to increase in the commercialization and industrialization, all are working together, means with the increased commercial activities and the trade activities has increased, and that is why this concept of salaried and wages, this has come into picture. डेफिनेटली इट्स नॉट नाउ, ये बहुत पुरानी बात है, नॉट नाउ कि मैं अभी बात कर रही हूँ सैलरीड एंड वेजेस की, बहुत सालों से हो रहा है. हाँ, ट्रेडिशनली वी हैव मोर ऑफ एग्रीगेरियन फार्मर्स, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट नाउ द सेंस कमर्शलाइजेशन, ट्रेड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड दैट इज़ वाई द लेबर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो कमिंग इन टू पिक्चर. ये भी धीरे धीरे सैलरीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो सैलरीड एंड वेजेस के तरफ जाएंगी, तो लेबर प्रॉब्लम्स भी होगा, इंक्लूडिंग दैट ऑफ वेजेस एज एन अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, राइट. Now, in regard to the wages, there's a need to formulate a suitable wage policy. तो इसी वजह से we need to formulate a suitable wage policy in order to counter all these issues, which may help to maintain industrial peace. तो सबसे पहली चीज आपको किस लिए हेल्प करेगी मिनिमम वेजेस एक्ट या वेज पॉलिसी, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस इंडस्ट्रियल पीस which is so essential for maintaining and promoting the economic growth of the country. Industrial peace जो है, it will help us in the economic growth and development. Fine. An objective of this policy is to set a floor to wages by establishing that may be regarded as a social minimum, which is to be designed to enable workman and his family to maintain certain minimum standard of living. तो एक certain minimum जो floor है, फ्लोर मीन्स सिंपली यहाँ पे मिनिमम फ्लोर की बात करी, दैट इज द मिनिमम वेजेस. एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए विच विल एंश्योर टू सेफगार्ड, और जस्ट टू सेफगार्ड बोलिए या सस्टेनेंस ऑफ द फैमिली. जो भी काम कर रहे हैं वो उनके लिए, उनकी फैमिली की सस्टेनेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर एक मिनिमम फ्लोरिंग होनी चाहिए. Right, ये हो गई a certain minimum standard in accordance with the modern ideas as understood in the country and permitted by the state of economy. It is in pursuance of this objective the government enacted the Minimum Wages Act 1948. So ये जो Minimum Wages Act है, Wages Act 1948, this came into picture. Since then ये वहीं से आया है, ये पॉलिसीज जहां पर हम लोग पूरी तरह से अपने मतलब एक मिनिमम एक वेजेस देकर एक सपोर्ट करने के लिए लेबर की फैमिली के लिए सपोर्ट कर सके एज पर करंट स्टैंडर्ड एंड ऑल. नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ मिनिमम वेजेस, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? द प्रॉब्लम्स ऑफ मिनिमम वेजेस इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू बी ऑन द फेस ऑफ इट. It really consists of so many problems. The first of this is to know what minimum wages implies. Should it be subsistence wage, which may be enable the worker to stay alive and maintain its working capacity, or should it be living wage? अब देखो minimum wages में there are many problems attached to it, because पहले मुझे समझना पड़ेगा कि हम लोग जो वेज की बात कर रहे हैं, whether it is a subsistence wage, मतलब बस रहने के लिए, जीने के लिए इतनी सी ज़रूरत है उतना है, और इट इज़ अ लिविंग वेज. ये दोनों कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा. which may also provide for maintenance of health and efficiency. Subsistence मतलब बिल्कुल एकदम मिनिमम लेवल पे जहाँ पे हम सिर्फ सस्टेन कर पाएंगे, बट इन लिविंग वेज यहाँ पर हम अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, मेजर्स ऑफ स्ट्रगल, कंफर्ट एंड सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द मोर इम्पोर्टेंट मिसफॉर्च्यून्स. और शुड इट बी अ फेयर वेज? अब हम आ गए फेयर वेज पे. ठीक है, क्या होना चाहिए? फेयर वेज समवेयर बिटवीन द लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लिविंग वेज एज परमिटेड बाय द कंट्रीज इकोनॉमी. अब वो फेयर वेज होना चाहिए समवेयर बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड लिविंग वेज. ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी. In considering these questions, one can hardly overlook the fact that minimum wage is essentially a relative term and may mean differently in different countries. ये जो minimum wage की बात हो रही है ना, ये हर country to country differentiate करेगा, अलग अलग होगी, definitely अलग ही होगी.
Again, it will also have to be considered whether there should be adopted a national system of minimum wages, providing for a uniform wage for all covered workers, subject only to regional variations, or a sectoral system of fixing different minimum wage rate for different sectors or industry, or a combination of both. अब यहाँ पे बता रहे हैं जब हम मिनिमम वेजेस की बात करें तो ये मिनिमम वेजेस किस तरीके से सेट होगी, whether it would be a means government will definitely government will set up the minimum wage according to the there should be a national policy, एक national policy होगी with some regional variation, कुछ अगर regional differences हैं या regional variations है उसको consider करेगी, और ये सेक्टोरल होगा कि हर सेक्टर में मिनिमम वेजेस इतना होगा। तो कैसे हम लोग मिनिमम जो वेजेस को फ्रेम करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। now after this questions are settled, another problem that will require serious consideration is that as to what methods and machinery should be used for fixing minimum wages। जैसे हमने ये देखा कि क्या मिनिमम वेजेस हम क्या रखेंगे, मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा दैट वुड बी द पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग, कि कैसे हम इसको फिक्स्ड करेंगे, व्हाट वुड बी द मशीनरी टू यूज्ड, मशीनरी to be used for fixing minimum wages, क्या मशीनरी हम यूज करेंगे फॉर फिक्सिंग अवर मिनिमम वेजेस, ठीक है। The government can use both direct and indirect method। अब हमारे गवर्नमेंट के पास दोनों मेथड है, गवर्नमेंट कैन यूज बोथ direct and indirect methods। The indirect methods may take the form of extending existing collective agreement to third parties। Indirect method क्या होगा, may take the form of extending existing collective agreement to third party and regulation of wages in public employment and public contracts by inserting fair wage clause in all public contracts। इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट मेथड में बोला जा रहा है इनडायरेक्ट मेथड में टेक द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग कलेक्टिव अग्रीमेंट, एक्सटेंड किया जाएगा एग्जिस्टिंग कलेक्टिव, अभी जो कलेक्टिव एग्रीमेंट है उसको एग्जिस्ट करने की बात हो रही है, उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है टू थर्ड पार्टीज, मतलब उसको थर्ड पार्टीज को दे दिया जाएगा। एंड रेगुलेशन ऑफ वेजेस, रेगुलेट जो वेजेस को रेगुलेट करेंगे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब पब्लिक सेक्टर में एंड पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, बाय इंसर्टिंग फेयर वेज क्लॉज इन ऑल पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फेयर वेज क्लॉज जो है उसको पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल के। The direct methods may take the form of fixation of minimum wages by statute or by order, regulation or decree of the government without any consultation with the interest